Hello, greetings. This is about my case. Haven't been feeling well, and very slow, but I try to play, and I see myself like before. Someone's something on me, like the engine getting heated without water. So the car engine, things like that, right? So this the adrenaline doesn't work. Well, that was a long time ago in 1996 when I realized in London that my adrenaline is not working properly. Of course, it was something like chronic fatigue and all this. So I cannot explain in detail. I've done it in many live stream Facebook. But yesterday, I just want to record as for the record that there's a bala, and someone doesn't want to tell me they are scared. Yusuf said he's a friend, also a friend of Yusuf Zaidi. I don't know in Pakistan how many Shia ulamas have been really fake or really true, you know, because Yusuf Zaidi claimed to be a Shia Sayyid, and then I started to suspect him. Something here, nature, I cannot name because they might kill, like break down trees or something if the tree is talking to me. I don't know, it was like sounds were coming to me. I cannot tell you, and all this, what, okay, India is not at fault. I don't know whether it is a Kashmiri person, Muslim, what they want from the mountains, jinns, their sardar. So something यूसुफ ज़ैदी ने बहुत बुरी बला मुझे पागल कर दिया ना ये यूसुफ ज़ैदी आया था तो बोला 21 days में कुछ होता है अमल वमल. After 21 days he said, he didn't say amal, he said after 21 days your life will become better and all this. तो पता नहीं क्या अमल वमल करते हैं. तो बहुत बुरी बला है, एक one of a kind ज़बरदस्त. पता नहीं ये phone, oh God, I'm really scared. I was saying, can I say this? I hope my phone doesn't get burned. So excuse me. अच्छा, इधर भी जब मैं आती हूँ ना, आती थी renewal के लिए after the madness and Yusuf Zaidi had found out. I had come and all this. I had found Yusuf Zaidi. तो शेख साहब के बेटे एक plane से गिर गया, accident. We lost him. I didn't even know. I mean, there were times I used to live in Karachi, even though from UAE, but I was confused about Sheikh Zayed and Sheikh Rashid. Sheikh Rashid was the father of Dubai, but at that time, I used to get confused and forget and all this, right? So, ये यूसुफ ज़ैदी की जो कज़न है, ये तो पंजाब से रहीम यार ख़ान से, और ये ना थी, और याया ख़ान का सुना था कि बहुत 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 ख़राब जनरल था पाकिस्तान, सबसे ख़राब. रेप करा है ना, तो हमारे पाकिस्तान में इनकी टाइप के they were the sounds were coming yesterday. इसको नंगा कर दो, इसको ये बना दो, वो बना दो. I was like, my God, they can give you these feelings where you can tear your clothes and run outside. I was warning sheikhs and throwing this and throwing that.
madness had come. I can't believe I have to deal with this. I don't know what this is. तो बेचारा जो था ना, जो मुझे कह रहा था नेचर में, बर्डी नाम बेचारा, वो बहुत स्कैर्ड था. भला नाम नहीं दे सकता हूँ मैं. I was playing a game on my mobile. I get so tired. No fuel inside him. Oil तो है. Sorry, just joking. Oh goodness. ऐसा अंदर से यानी rot करे. My teeth have been rotting. I have to go to the dentist here. Jesus Christ, what is this? This is one of a kind or something. The bird was scared to give me the name. I hope they don't kill the birds. Okay, now it's come out, sorry. This is how I am. बाकायदा मुझे मैं गौर कर रही थी, paying attention. He was saying, I cannot tell you. Hello, बेचारा. Yusuf Zaidi's friend. And Yusuf Zaidi has made you, जो किया है ना, जो भेजा है तुम्हारे ऊपर, वो तुम्हें पागल कर दे. अच्छा, मुझसे नहीं पूछो कौन है. मैं बेचारा डर रहा था. Bird was scared to reveal the name. Okay, now there's a little bit of, here it's not that hot, so the window is a little open, slightly. And also I decided to keep it slightly open, even if the AC and all, because of my bad habit of smoking and all this. And so I should have come here. I mean, I was playing a game, and I don't know like what to do. So मैं सोच रही थी, will this go on with me? I'm like pain, hemorrhage of energies and crazy stuff. I can't talk properly. So things like that. Oh my God. Yusuf Zaidi ने enforce किया है या क्या किया है? I don't know what he was. Maybe the bird is scared to tell me the real name. I don't. So मेरे father को भी मेरे माँ के against वो नहीं है जो एक पाकिस्तानी याया खान की follower होगी शायद. I don't know who she is. Sorry, they won't tell me. नहीं, लेकिन इधर मुझे रोक दिया था. हथौरा ग्रुप का कौन था behind? My father, they said. I couldn't believe it. I wasn't ready for it. So, अच्छा वो हिंदूज ने ट्राई किया तो मुझे लगता है कि गुस्सा तो खैर छोड़ो, but this is कि ये सच नहीं है. You see, and there are a lot of mess up on YouTube about lot of disturbance, like एक ex-Muslim दूसरे ex-Muslim को वो कर रहा है, expose कर रहा है कि ये fake है. वो एक लीक हुआ था वीडियो कि एक मुसलमान सारा खान को, कालिदासी को कह रहा था कि I want to do business. So वो उधर पाकिस्तान में तो अपने माँ बाप को बेचते हैं बिजनेस के लिए. और ये नाम exploiting Islam to the core. Or so Sarah Khan shared a video where maybe a Muslim approached her that he wants to do business. So वो कैसे ex-Muslim बन जाए, emotional story दे, और ऐसे. हाँ, तो हमें नहीं पता क्या हो रहा है.
सॉरी जैसे वो ना एक मैंने वीडियो एक लाइव स्ट्रीम पे आई हर्ड अबाउट स्पार्टिकस. अच्छा ये लोग पाकिस्तान से अब इधर आ गए हैं यूट्यूब पे मेरे पीछे. यू नो स्पार्टिकस एक्स मुस्लिम, उनकी स्टोरी बड़ी वो है कि कैसे सर्वाइव किया जंगलों में ये वो. आई डोंट वांट लाइक बट प्लीज़ इन्वेस्टिगेट बिकॉज यू नो ही. अच्छा फिर उन्होंने अपना नाम बताया जब मैं लाइव स्ट्रीम फेसबुक पे मैं कंप्लेन कर रही थी बिकॉज ही साउंड्स लाइक डॉक्टर ज़मीर अख्तर. Arshia. So anyways, then he gave his name कि वो उमर सानी है और ये है. तो अभी जो रिसेंटली हुआ था ना इनमें ही गड़बड़ें हो रही हैं ये पाकिस्तानी. अच्छा कुछ जैसे sorry some of the Christians have also come, Rob Christian and all this, but Dr. David Wood he gives a total from the thing. Okay, he's got a style and everything, but I don't blame him because see I also go funny, right? So वो देखिए ये क्रिश्चियंस जो पक्के जो अमेरिका यूरोप से है ना साइड से ये बहुत ट्रस्टवर्दी ऑनेस्ट पीपल है. as far like Dr. David Wood, ये लोग they don't do like these Pakistani, sorry to say Pakistani ex-Muslim अभी तो बिजनेस भी कर रहे हैं. सारा खान से लीक हुआ था ये खाली मैं सिर्फ यू सी यू कांट ट्रस्ट पीपल. ऑन टॉप इज दिस थिंग आवाज़ें आ रही हैं सो आई हैव टू फ्रॉम ऑल साइड्स ट्राई टू पैनिक स्ट्रक केओस कमोशन. ओह और मुझ पे जो जुल्म हो रहा है मेरे बॉडी में यू नो आ करके तो पिंग पोंग आई प्ले. हाथ ची कर रहे हैं ज़्यादा लाइक if I go into a higher arena it's till 11 match points 10 11 with. तो मैं देख रही हूँ कि मैं तो हालांकि अगर मुझ में वो एड्रेनलिन रनिंग एनर्जी होती तो मैं अच्छा करती. मैं तो बैठे बैठे इधर अच्छा नहीं कर सकती हूँ, खेल नहीं सकती हूँ बराबर. वर्ड ब्लिट्स फेसबुक पे मर जाती हूँ. My mind, God, how did I had to practice word journey. हाथ पांव कांप रहे हैं कर रही हूँ मैं. प्लीज़ ये नहीं समझें कि मैं कुछ मज़े कर रही हूँ. उधर फेसबुक पे मैं जाती थी लाइव स्ट्रीम क्या था मेरा प्रिंसिपल के लिए उधर भी एक पंजाबी आ गया. तो माफ़ करना बहुत उससे हैवी हार्ट से मैं कह रही हूँ. शायद लगेगा नहीं साउंड नहीं करेगा शायद आपको बुरा लगेगा. Maybe you will not like it with a very heavy heart. I'm saying that now I'm policing on YouTube that some ex-Muslim ये जो जैसे ना ये लाहौरी था उससे सॉरी उसके बाद तो इंटरनेट पे आ गए थे. आनंद किरण कौन था इनके साथ एक इंडियन हिंदू भी है जो राधा रानी को यानी वो किया है ना पता नहीं बिट्रे किया है. ये लोग समझते नहीं हैं. हाँ सिर्फ ऐसे भी लोग हैं बिट्रेयर्स. तो अच्छा India Hindu goddess. I don't want to talk about that right now. I'm very angry at the Hindus, but you know थोड़ा सा ये इनकी श्री श्री रविशंकर जी बहुत शरीफ हैं. मिस्टर राज गुप्ता का याद दिला ऐसे शरीफ हैं यानी उनमें तो कुछ है यानी वो है ही नहीं. वेरी गुड पर्सन, वेरी वेरी जेंटलमैन, गुरु है. तो जब मैं डाउट्स में आती हूँ जैसे मैं श्री एम के डाउट में आई थी और परमहंस विश्वानंद तो श्री श्री रविशंकर जी बानू दीदी ना हाँ God.
तो ये मुझ में क्या डाला है, बहुत सख्त जादू किया है। अब ये पता नहीं कभी की बर्ड तो मुझे ये कह रहा था आवाज़ें मेरे फादर पे जा रही हैं, but the bird was saying like I was saying, can you please tell me if he was saying, can you please tell me it's your my father? तो मुझे कह रहा था I cannot tell you who it is. बहुत डर रहा था, बहुत डर रहा था. He was very scared. अच्छा, एक तरफ से तो ऐसा लग रहा था कि my eldest uncle से आवाज़ आ रही है ना, कि और एक पंजाबी के साथ या किसी पाकिस्तानी, इसको नंगा कर दो, ऐसा पागल कर दो कि ये नंगी बाहर निकले, prostitute बन जाए. Can you believe? Yeah, I can believe. You know, वो बात हुई थी, a reminder that why did my father tell Fuad Sajwani? एक दिन पहले आया था वापस कि why did she told me that Fuad Sajwani had said something to her which was very, very bad. So she told him that your shit will come out in the middle, in his in his mother's room. He was living there. After that, he didn't even come, but shit came out. He didn't come to Karachi for Muharram. So maybe him and my father decided to, like he can say that he can flirt with Afsar, my mother, another person, married women. Maybe he wanted to, he said something really bad to my mother like that. Like, come with me. Huh? Like he wanted to rape my mother or something. His younger brother's wife. So then Fuad Sajwani came after me. पता नहीं मस्कत के माउंटेन्स के जिन हैं, कश्मीरी जिन से झूठ बोल रहे थे मुत्तार उस्मानी के थ्रू या नहीं, कि कौन है. Oh my God. So hello, if I start to tear my clothes, go out naked, please understand it. UAE, Dubai police, I cannot say anything and can't handle it. Okay, thank you very much. I will continue this video later.